Hello viewers, hope you're doing well. This is me Priya and it's my pleasure to welcome you back to Z Connect. Every week we bring you closer to inspiring stories of compassion, real people making a difference and the very best in entertainment. Whether it's on the field, on stage or within the community, it's all about the energy, the passion and the connections that bring us closer. So if you are ready, let's get started. A businessman with a big heart, he has been actively working towards stray dog welfare and creating real change on the ground. Balancing work with compassion, he shared his journey, the realities on the ground and why this cause needs more attention. तो मतलब मेरी ना वजह से होता ना आंखों से आंसू आंखों से एक आ गया कि इट्स इन्वेंशन हो गई है. So my factory is known as कुत्ते वाली factory. And even my house is known as कुत्ते वाले सरदार जी का घर. So she drank water and she sat down and started crying. मैंने कहा I got afraid why she's crying. गाय को या चिड़िया को वो जब खाता है ना तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है. बिल्कुल. Jagjit ji, thank you so much for joining us on Z Connect. Thank you so much for having me. नहीं, हमें पता चला आप दुबई में हैं तो हम भागे भागे आ गए आपसे बात करने के लिए because there are very few people in the world who are so involved in animal welfare and आप चलाते हैं Stray Talk India. And that is something that we really want to know more about because it's such a brilliant, such an incredible thing you are doing. Kudos to you for that. Thank you so much. Thank you. So tell us more about Stray Talk India. Where did the idea come from? What was the inspiration? Well, it started, I'll start from the beginning. Like I'm a paint manufacturer. I have factories in Delhi. And these are actually my factory waste. जो पेंट के ड्रम जब खाली हो जाते हैं सो दे आर एक्चुअली माई फैक्ट्री वेस्ट. सो मोस्टली वी यूज टू डिस्कार्ड देम टू द स्क्रैप डीलर. सो वन डे इन द फैक्ट्री आई सॉ अ डॉग स्लीपिंग इनसाइड द ड्रम. ओके. जब उसको देखा उधर तो आइडिया स्ट्रक, लेट्स मेक द बेस्ट यूज ऑफ द वेस्ट. सो आई टुक 4 ड्रम्स टू माई होम एंड प्लेस्ड इट आउटसाइड माई हाउस. एंड अपने ड्राइवर को बोला कि जस्ट गो एंड फेच सम 4 कंबल फ्रॉम द मार्केट एंड उसने लगा दिए. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, सो टू माय एस्टोनिश मेरी गली के माय स्ट्रीट के 4 स्ट्रेज उसके अंदर सो रहे हैं. एंड तो मतलब मेरी ना वजह से होता ना आंखों से एक आ गया कि इट्स इन्वेंशन हो गई है. व्हाट आई वाज प्लानिंग कि इतने सालों से हमारे यहाँ वेस्ट हो रहे हैं ड्रम, तो इसका एक यूज़ मेरे को मिल गया. So I have a separate warehouse of about 6,000 square feet in which we collect the drums for 10 months and we distribute for 2 months. Brilliant यार, मतलब तो that's where the idea came and that's where you built this whole Stray Talk और उसके बाद लोगों का प्यार and the people started approaching as मतलब जैसे ये spread होता गया and people started approaching and बहुत से लोग आते हैं कहते हैं सर हम डोनेट करना चाहते हैं. सो आई डोंट टेक एनी डोनेशंस बिकॉज इफ गॉड हैज मेड मी केपेबल टू डू दिस, सो आई डोंट टेक एक्सेप्ट नॉट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन. Wow. And there must be people coming to adopt as well. No, but I don't do any adoption. You don't do that. But I tell them कि instead of buying, adopt. Because मेरी अपनी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे हैं. मेरे को तो रास्ते में जैसे कोई पप मिल गया, उठाया गाड़ी में डाला, फैक्ट्री ले गया. अब फैक्ट्री में क्या है कि और भी हैं तो उनके साथ ही वो. सो माई फैक्ट्री इज नोन एज कुत्ते वाली फैक्ट्री. एंड इवन माई हाउस इज नोन एज कुत्ते वाले सरदार जी का घर. एंड इंडिया एज अ कंट्री, वहाँ पर स्ट्रीट एनिमल जो पॉपुलेशन है, इट्स मैसिव, enormous. Yeah, exactly. And I think initiatives like yours are definitely bringing about a change, but change is also needed at a systematic level, you know. मतलब system में जब change आएगा तब जाकर सारे stray animals protect हो पाएंगे. Vaccination and sterilization. अगर इसका कैंपेन सही तरीके से चलाएंगे तो regarding adoption, sterilization ताकि इनकी growth रुक जाए
और वैक्सीनेशन. दीज आर द 3 थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए गवर्नमेंट मेरे ख्याल में फंड्स देती है, पता नहीं यूज़ होते हैं कि नहीं होते हैं, दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. बट येस, गवर्नमेंट शुड seriously focus on this. What are the challenges you have faced ever since you started this? The challenges I faced was that in the first year when I started this, so I got some few calls from people saying, don't do this, you're promoting strays. Got calls from 2 lawyers also. We will sue you in court, you're promoting strays, ye wo. So I said, okay. I ignored it actually. I said, let me do my job. You, if you want to do your job, you do your job. Yeah. I simply ignored it, but haters are few, lovers are like in abundance. Yeah. तो जो lovers का support था और lovers का जो मेरे को जो calls and blessings जो आती हैं, वो फिर that makes me मेरा moral बहुत strong हो जाता है उससे. And I plan to make more and more every year. And it has increased every year. The first year I started with say about 1,000 and 2,000. Last year I completed 4,500. This year we have completed 7,000. So mostly we have crossed approximately 27 to 28,000 we have done in 7 years, 8 years. 27,000? In 7, 8 years. Okay. Wow. So I'm talking about the number actually. पहले साल 1,000 की है, दूसरे साल 1,500, So वो से 2,000. बढ़ता ही गया. बढ़ता चला गया. So this year was the maximum. This year we did 7,000. It's brilliant. Amazing. And what else is coming up for Stray Talk India in terms of projects, initiatives, campaigns? Campaigns में I also like feel कि हमें sparrow को भी बचाना चाहिए. So over the years sparrow has gone extinct actually in Delhi. And there was a story also behind this. Like I was standing in my garden and suddenly a stone-like thing fell from the sky to the ground. तो उठाया, it was a sparrow. मैंने कहा इसको क्या हो गया? तो मतलब it was peak summers and she was almost dead. उसको टैप किया, पानी पिलाया and she flew off. Oh. So that inspired me also कि मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या ये सिग्नल था, इंडिकेशन था. And I was already searching on sparrows. फिर मैंने एक वेंडर ढूंढा विच इज़ अबाउट इन राजस्थान ओनली. उसको मेरे को वेंडर मिला कि इसको बनाने के लिए. आई अप्रोच्ड हिम. ही वाज स्पेशलाइजिंग इन दिस स्पैरो हाउसेस. तो स्पैरो हाउसेस बनवाए, स्टार्टेड प्रमोटिंग इन माय एरिया. सो इंस्टॉल्ड अबाउट 2,000 ऑफ देम इन माय लोकल एरिया. And I can see the increase in sparrow population. In last 3-4 years, the sparrow population has really, now the sparrow has been seen in Gurgaon. That's so brilliant. When I started this in about 3 years, 4 years back, sparrow के ऊपर, I could see they are now selling sparrow houses. Wow. So इसका मतलब लोगों में awareness आ रही थी. And I was very happy to see that कि at least हमारे कुछ करने से लोगों में awareness आ रही है. People are buying sparrow houses and putting it in their houses. Very amazing यार. But घर पे आपकी फैमिली से कितना सपोर्ट आपको मिला है इसमें? बहुत ज़्यादा. My kids, my wife, my mother, everybody supports. Everybody. कभी किसी ने ये नहीं कहा कि you're wasting so much of money on it. कभी भी नहीं. Yeah. And I tell people also क्या होता है लाइफ के अंदर you save money और एक दिन आप चले जाते हो दुनिया से और आपका बैंक बैलेंस जो है ना वो बैंक में रह जाता है. बिल्कुल. सो नहीं, सेव करना बहुत अच्छा है. मैं तो कहता हूँ इंडिया हमारा जो पीछे रिसेशन से बाहर आया था जब सारे वर्ल्ड में, तो हमारे इंडियन वुमेंस जो थी उन्होंने सेविंग्स करके रखी थी. जो हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा रिसेशन का उसको इफेक्ट आया नहीं. बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट थोड़ा सा पैसा निकाल के अगर आप सोसाइटी को वापस कर दो तो दुनिया में आप टेम्परेरी टाइम के लिए हो पर एटलीस्ट गिव सम अमाउंट ऑफ योर मनी. जगजीत जी, आपका सिर्फ नाम ही जगजीत सिंह से मिलता है या आपकी आवाज़ भी उनसे मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आवाज़ तो आप देख ही रहे हो. बट यस, वो तो खैर ही वॉज अ लेजेंड. वो तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है वो तो. पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा गाते होंगे तो आपको गाना तो पड़ेगा हमारे. आपकी वाइफ भी बिल्कुल सामने बैठी है. तो मेरी गाती है. जिनके साथ आपने 19 इयर्स की उम्र में शादी कर ली थी, वो भी लव मैरिज, तो उनको डेडिकेट करते हुए एक गाना सुना दीजिए. अरे नहीं, मैं नहीं गा सकता. शी कैन सिंग, मैं नहीं गा सकता. एंड आई कैन टेल यू वन मोर स्टोरी अबाउट वाटर. एक्चुअली वेयर आई स्टे इन गुड़गांव, it's a new area and lot of construction is happening.
So I could see the labor crossing the house and everything, and they are very thirsty. तो मेरे जो गार्ड था उसने 2 घड़े लाकर पानी के रख दिए, and I could see people coming and drinking. So there's a shortage of water. So I installed a fridge outside my house. Very good. फ्रिज लगाया एंड ठंडे पानी का, एंड आने लग गए लोग थोड़ा बिल्कुल। पानी पे। तो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। जब आपकी चीज़ से आप देखो ना, आप किसी को खाना खिलाते हो, गाय को या चिड़िया को, बहन वो जब खाता है ना तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है। बिल्कुल। सो देन पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर, आई वाज Yeah. वेरी सेटिस्फाइड, सो Yeah. वांटेड टू like do more. And one day I was coming from somewhere, so just stood my car, got out, and there was a very old lady like with a bended stick. She was drinking water, and I was just admiring her, like she's drinking water, very old lady. So she drank water and she sat down and started crying. मैंने कहा I got afraid, why she's crying? तो I stood there. तो जैसे ही उसकी जैसे ही वो मतलब शी टर्न्ड, ऐसी शी वो टर्न, तो उसके साथ मेरी ना आंखें थोड़ी ना चार हो गई, एंड शी ब्लेस्ड मी लाइक दिस, एंड बिफोर आई कुड स्टॉप हर शी वेंट ऑफ। अच्छा। तो मतलब लगा कि यार इसको तो कितना वो शी वॉज थर्स्टी कि उसको पानी मिला, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर गेटिंग वाटर, दैट शी वॉज सो थर्स्टी। And she in turn gave you blessings and बहुत दुआएं आपको देकर गई। मैं उसके बाद, क्योंकि हमारा एक एरिया जो है ना, इट्स अ प्राइवेट काइंड ऑफ ए DLF एरिया, सो टू इंस्टॉल एनीथिंग ऑन द रोड यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। सो आई वेंट टू द ऑफिस, आई टुक परमिशंस फ्रॉम देम। तो मैंने 18 कूलर, जितने फ्रिज पूरे एरिया में जहाँ जहाँ मैं लगा सका, मेरी जहाँ तक मेरी रीच जा सकी, मैंने 18 फ्रिज लगाए, एंड पीपल really bless me. और मैं लोगों को कहता हूँ कि यार कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज कितने का आता है? 30-40 हज़ार रुपये का आता है। अगर एक गली में 20 घर हैं तो आप 2-2 हज़ार रुपये डालोगे, एक कोने में फ्रिज लग जाएगा। बिल्कुल। करने वाला बनना चाहिए, यू एक्चुअली हैव टू टेक अ इनिशिएटिव टू डू इट। एग्जैक्टली। पैसे हर एक के पास है, बिल्कुल, करने का थोड़ा सा अगर आप इनिशिएटिव करोगे तो हो जाएगा। और अभी तो आपके ऊपर मूवी भी बन रही है, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरे को लास्ट ईयर एक डायरेक्टर का मैसेज आया, मोहनजीत कलसी फ्रॉम बॉम्बे, एंड शी मैसेज मी एटलीस्ट 6 टाइम, एंड आई थॉट के मस्ट बी अ स्कैम, क्योंकि मेरा ना फ़ोन है जो इसका स्ट्रेट टॉक का, इट इज़ ऑटो रिप्लाई, उसमें मैंने हर चीज़ मेंशन करी हुई है। तो पीपल के जो क्वेश्चन होते हैं वो लंबा सा ना, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी देयर। तो दिस लेडी केप्ट ऑन मैसेजिंग 6 टाइम। जब उसका मैसेज आया मेरे को लगा कि चलो लेट मी ट्राई, बिकॉज कहीं स्कैम ना हो ना कि कौन है। देन आई कॉल्ड हर, शी टोल्ड के दैट आई एम द डायरेक्टर ऑफ films and everything, and I want to make a movie on you. So she has made a short documentary of about 30 minutes, and that will be coming on OTT soon. Wow, we look forward to that. Amazing. थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी लगी आपसे मिलकर कि हमारा हिंदुस्तान इतना अच्छा यहाँ फैला हुआ है दुबई में, और आप जैसे कैपेबल लोग यहाँ पर हैं। और हम और आगे तक लेकर जाएंगे। अबाउट स्ट्रेट टॉक इंडिया, वी वुड लाइक एवरीवन इन द UAE एज वेल टू नो, इन द मिडल ईस्ट टू नो। It's time for a short break, but we'll see you on the other side with lots more. Welcome back. Weekdays just got a serious upgrade with the Arm & Hammer Open Play at Pickle Turf, bringing a whole new level of energy to the court. From powerful serves to intense smashes, every moment was all about performance, confidence, and staying at the top of your game. And keeping players fresh through it all was the Arm & Hammer Ultra Max Antiperspirant, providing long-lasting protection, so the focus stayed where it should be, on the game.
brought a whole new energy, all thanks to Arm & Hammer Open Play at Pickle Turf, where rallies are longer, competition is hotter, and staying fresh is part of your game plan. From every serve to every smash, this is where performance meets confidence on and off the court. Whether you're smashing, sprinting, or diving for that winning shot, you need something that keeps up with your game. And that's where the Arm & Hammer Ultra Max Antiperspirant comes in. It gives you 48-hour protection, so you stay confident right from your first serve to your final point. Because here, it's simple. Play harder, stay fresh longer. No distractions, just pure focus on the game. And the best part, it is powered by baking soda, a natural ingredient known to fight odor, so you stay fresh and confident no matter how intense the match gets. Arm & Hammer Pickleball Player of the Week is Akshaya. Congrats, Akshaya! So whether you want to compete or just enjoy the vibe, one thing's for sure. You bring the game and Arm & Hammer Ultra Max will take care of the rest. So come join us every weekday until June 2026 at Arm & Hammer Open Play at Pickle Turf from 9 to 11 p.m. Come, play, stay fresh and be part of the action. We'll take you to a distinguished event right after this short break. Stay tuned. Welcome back. An unforgettable evening of dance and musical extravaganza, Suhani Sham Season 2 was brought to life by the Padma Show in association with Zee TV. The night came alive with electrifying performances, soulful music and vibrant dance acts, all wrapped up in an atmosphere of incredible energy. From start to finish, it was a night filled with rhythm, talent and pure entertainment that left the audience wanting more. Hi everybody, hope everybody's safe and sound. So we are here at Suhani Sham. This is season 2 and today is a very wonderful evening, a lovely evening. The audience is jam-packed and the show is filled with a lot of positive vibes, people enjoying the show, coming down to relax. So what we've done today is we've got a lot of music, we've got dance, we've got fashion show of local talents and international singers. And what's interesting is like we have a very beautiful girl coming up and singing a song which is apt for the situation, Heal the World. It's a lovely, lovely evening and I'm enjoying it and people around here are enjoying it a lot. And what's more adding cherry on the top is today a few women are also going to be recognized for their good qualities in life and how they have impressed as normal women, how they've impressed other people to add in these qualities to their life. Hi, my name is Lavalina Sandeep Nair and I'm 16 years old. I was born and raised here and I've been doing music my whole life. I've
already finished with my vocal diploma like 3 years ago, and also I finished with my bass guitar and almost done with my piano, and my musical journey has been amazing, and I love performing at places like over here, Sharjah and Flag Island. I'm so fortunate for this opportunity, and I promise I'll make the best out of it. And I've been performing ever since I could remember. I think my first performance was at 4, and then in 2018 I went to Voice Kids Russia to represent India, and then we represented India later in Belarus in 2019 in an event called Slaviansky Bazaar. And ever since then, it's been more of sharing my musical journey with the people here, and that's that. So I'll just be singing a couple lines of a really nice soul song by the great singer Aretha Franklin. It's Ain't No Way. So, ain't no way for me to love you. If you want, let me. It ain't no way for me to give you all you need. If you won't let me give all of me. Thank you. Hi, my name is Jayashree, and we three of us, we represent Harmony Institute of Dance and Art. We have been learning classical dance form named as Kathak. We are really grateful to have given this opportunity and platform to showcase this talent. Hello, my name is Astha, and I'm really glad to perform here at the Padma Show. It's a really big opportunity for me to perform here. And I'll definitely add this to my portfolio in the future that I've performed here. It's a really big opportunity. Hi, my name is Sai. I've been learning Kathak, and it has been a very great opportunity to be able to showcase my art form over here. It was a great exposure, and I hope to continue this art form. Thank you. That's all for this week on Z Connect. We'd love to hear from you, your thoughts, your favorite moments, and what would you love to see more of on the show. Connect with us on our socials, share your love, and most importantly, your valuable feedback. Keep that positivity going, and I will see you next Sunday, same place, same time. Take care. Bye-bye.